ऐसे अगर आप शाय होके या इंट्रोवर्ट होके घर बैठ जाओगे, देन यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग. एटलीस्ट यू हैव टू कम आउट फ्रॉम योर जोन टू लर्न दैट. अगर आपको नहीं सीखना है, दैट इज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग, बट इफ यू रियली वांट टू लर्न, देन यू कैन डू दिस. अगर आपको शर्म आ रही है, दैट यू फीलिंग शाय टू डू इन पब्लिक, then you can simply do the same thing at home in your own room. You can get in your room and then you can just make a video about your own thing, like where do you study, where do you sleep, stuff like that. Go in your balcony or on your terrace, so stuff. You can also do that if you're a shy person. And if you're not shy person, I don't have to say anything to you, because I don't think so anybody is shy these days. People go on Instagram and do whatever they like, and whosoever they shy, they actually do it the same thing, but they do it like secretly, so we call them stalkers, because there is nobody, ऐसा कोई भी ना जो नहीं करता है, सब करते हैं, कुछ दिखाया करते हैं और कोई नहीं दिखाया करते हैं. So we know about it. Hello guys, good morning. हिमांशु दिस साइड, बैक अगेन फॉर इंग्लिश क्लासेस. आज नया टॉपिक लेके आया हूँ. इंग्लिश बोलना चाहता हूँ पर प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ. एब्सोल्युटली सबका एक तरह से किसी की इच्छा होती है, डिजायर होती है, किसी का ड्रीम होता है दैट आई वांट टू बी अ वेरी गुड इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन. सबको अब बनना होता है, सबको करना है. एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्पीक इंग्लिश. कोई जॉब के लिए, कोई बिजनेस के लिए, कोई किसी को इंप्रेस करने के लिए, कोई फ्लॉन्ट करने के लिए, एनीवेयर दे मेड इट मैंडेटरी थिंग ऐसे बना लिए लाइफ में कि यार इंग्लिश बोलूंगा तो अच्छा लगूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा. सो ये वैसे ये कोई ऐसा कोई सच नहीं है. अगर आप इंग्लिश बोलते हो तो इट इज बेनिफिटरी फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू ओनली, दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश. दैट इज गुड. यू इंप्रेस योर सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. अपने लिए सीखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा. किसी और के लिए करोगे तो well I can't motivate you on that, because अगर आप कर ही रहे हो किसी और के लिए तो it's not something that you will regret in the future. So make sure you don't do that. Do it for yourself. So if you look at here कि मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ और प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ. मैनी पीपल एक्चुअली वांट टू लर्न इंग्लिश. वो खरीद के लेके आते हैं, डिक्शनरी खरीद के लेके आते हैं, कभी कुछ बुक्स खरीद के लेके आते हैं जिसमें लिखा होता है इंग्लिश सीखे 7 दिन में, 15 दिन में, 21 दिन में. वो बुक्स के अंदर वो पढ़ते हैं, लेकिन वो उसको प्रोसेस नहीं कर पाते. तो स्टिल देर आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश. और देर आर अदर मेथड्स दैट यू गाइस ट्राई टू डू. आप कभी कभी क्लासेस ज्वाइन कर लेते हैं ऑफलाइन, जैसे कि वहाँ पे जाके आप इंग्लिश बोलना मतलब सीखे वहाँ पे जाके इंग्लिश, या आप वर्ड मीनिंग की बुक लेके आ जाते हैं जहाँ पे आप उनको याद करने की कोशिश करते हैं, बट यू आर नॉट एबल टू फोकस एंड प्रैक्टिस एट द टाइम. आप फिर भी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं. उसका रीज़न क्या है? रीज़न बीइंग क्योंकि आप उसको ढंग से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसा कोई स्पोक्स पर्सन नहीं मिल रहा है जिससे आप बात कर सके, दैट यू कैन कम्युनिकेट विद समवन. आपने अगर 10 वर्ड सीखे हैं लेकिन आप उसको किसी और से बोल नहीं पाते हैं, तो आपका माइंड उसको प्रोसेस नहीं कर पाता है और स्टोर नहीं कर पाता है. पर सबसे पहली बात मैं आपको बोलूँगा, दैट इज़ आवर टेलीग्राम चैनल. एज यू कैन सी, आप इसके ऊपर जाइए, हमें ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम पे, और आपकी कोई भी क्वेरी है रिलेटेड टू स्पीकिंग इंग्लिश, यू कैन ड्रॉप डाउन देयर. और ऑलवेज guys get updates about speaking English data. We'll be sending you over the Telegram, so make sure guys get connected with us, so we will help you on that. Okay, moving on further, let's talk. प्रैक्टिस करने के बेस्ट तरीके हैं. सबसे पहला, आजकल लाइफ में सबसे बड़ी चीज चल रही है वो है सोशल मीडिया. जो ये सोशल मीडिया पे अगर आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे दिखाओ व्हाट्सएप, ऐसा कोई एक दो ही बंदा ऐसा होगा जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहा है. आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीबॉडी हु इज नॉट यूजिंग व्हाट्सएप. एवरीबॉडी इज यूजिंग व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ऑल दी सोशल मीडिया साइट्स. सो इट इज अ वेरी बहुत ही इजी वे आपके लिए इंग्लिश सीखने का, कम्युनिकेट करने का. आप क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना फ्रेंड जो आपका दोस्त है उसके साथ में बात कीजिए इन ऑडियो नोट्स में बात कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए इन इंग्लिश. आपको ऑडियो नोट्स भेजने इन इंग्लिश में, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग आप ऑडियो से बात कीजिए. हाय, वेयर आर यू मैन? एंड लाइक, ओके, आई नीड समथिंग फ्रॉम यू. कैन यू हेल्प मी विद समथिंग? कैन यू ड्रॉप मी समवेयर? आई नीड योर बाइक, आई नीड योर कार. Did you do the project already? When you are going to school, when you are leaving, when we are going together, stuff like that. You can just record yourself and send it to your friend. It will be much easier because you will be communicating in English first, and then you can also hear your own recording. आप खुद को सुन सकते हैं वापस रिप्ले करके कि यार जो मैंने बोला है वो कितना सही बोला है. आपका पता है क्या होगा उससे? आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बहुत ही अच्छा बिल्ड हो जाएगा.
अगर आप ऐसे कंटिन्यूसली अपने फ्रेंड्स लोगों से बात करते रहेंगे ओवर व्हाट्सएप इन द वॉइस नोट्स, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अलग लेवल पे बिल्ड होगा, विच मीन्स दैट यू विल बी एबल टू लाइक आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाओगे कहीं पे भी। आपको हेजिटेशन नहीं होगी जब आप कभी उस आदमी को लाइव मिलोगे, लाइक अगर आपके साथ उसे मिल भी रहे उससे इन पर्सन, तो आपको कभी हेजिटेशन नहीं होगी, बिकॉज यू गाइज ऑलरेडी स्पोक ऑन दी व्हाट्सएप इन इंग्लिश लाइक द थ्रू दी वॉइस नोट्स। सो मेक श्योर गाइज यू हैव अ फ्रेंड, और कोई नहीं है तो मेक श्योर किसी को ऐसा ढूंढो, कोई दोस्त बनाओ, नहीं तो हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके आप भी कर सकते हैं ये। ब्लॉग, वेरी गुड, दैट इज वेरी गुड। ब्लॉग देखने नहीं है, यू डोंट हैव टू वॉच, आपको ब्लॉग बनाने हैं। होम टूर, इंट्रोडक्शन, सिटी, प्लेस, यस, you don't have to watch the vlogs, even though I mean instead of that, be that person who's holding this camera and then record yourself like this. Hi, my name is this, I am from that particular city, right now I'm going to show you my house, how it looks like, and also my room as well. Okay, I'm from this particular city, my name is this, I am from this college or from this school, my education background is that. You will explain something like this while holding the camera, so you're recording yourself, which means you are building confidence. Yes, then you later on you can watch that particular vlog and see कि आप कैसे लग रहे हैं इंग्लिश बोलते हुए, आप कितनी मिस्टेक करी है आपने, या आपने कितना, क्योंकि अपना आप खुद जब आप देखोगे continuously you will be watching yourself speak English, it will automatically build a very good confidence in you. That is also going to help you in your personality development. Trust me guys, because then you'll be realize कि मैं कैसा लग रहा हूँ बोलते हुए English, while walking, my facial expression, how it's all looking. So that will be helping you not only brushing your English but also in your personality development. So make sure guys you do that. ऐसे अगर आप साय होके या इंट्रोवर्ट होके घर बैठ जाओगे, then you won't be able to do anything. At least you have to come out from your zone to learn that. अगर आपको नहीं सीखना है, that is an entirely different thing, but if you really want to learn, then you can do this. अगर आपको शर्म आ रही है, that you're feeling shy to do in public, then you can simply do the same thing at home in your own room. You can get in your room and then you can just make a video about your own thing, like where do you study, where do you sleep, stuff like that. Go in your balcony or on your terrace, so stuff. You can also do that if you're a shy person. And if you're not shy person, I don't have to say anything to you, because I don't think so anybody is shy these days. People go on Instagram and do whatever they like, and whosoever they shy, they actually do it the same thing, but they do it like secretly, so we call them stalkers. Because there is nobody, ऐसा कोई भी ना जो नहीं करता है, सब करते हैं, कुछ दिखाया करते हैं और कोई नहीं दिखाया करते हैं. So we know about it. Absolutely. So whosoever saying that I don't do that, they secretly do that. We know about that. So you don't have to say मैं नहीं करता ऐसा है, मैं ऐसा नहीं हूँ. Nobody is that. Okay, everybody is on some kind of a level. Maybe they don't want to show, but they are. Okay, whosoever studied human psychology, they know about it, like me, because I have studied that, so I'm aware of it कि किसी का behavior कैसा जा रहा है. So make sure guys, just if you want to learn, then do stuff like that. Okay, moving on further. Yeah, now how you can communicate with people or the society. You can go to the restaurants, you can go to the, I mean, you're in the office or the sports area. Let's just say any sports that you play. Make sure when you go there, greet people with the in English. Like you can see here, hi, hello, I'm Ragini, get ready for class, got refreshed, good morning, went for morning walk, went to market, had some snacks, I took a breakfast, I ate breakfast, woke up 6 a.m., took dinner with family, came back home, brought some grocery, I took rest then. So these are some simple words that you can use when you are communicating in such type of areas like restaurants, sports place, or work. Make sure when you go to the work, good morning, how are you, what you doing, what you ate last night, oh, I was kind of tired last night, I went to the gym then, stuff like that. You can talk to your colleagues, your managers, or whosoever right there, then and there. And if you go to the restaurants, you can also do that. Even the waiters are nowadays speak very good English, because this is how, अगर वो अच्छा बोलते तभी तो उनको हायर करते हैं. So you can communicate with them, or you can communicate with the sports person that you're going with. So make sure that you can, these are very simple words and simple English that you can put it like into the sentence and just ask somebody the question, because the more you do it, the less easier it will be for you. All right, join our Telegram daily practice. Yes,
अब हमने जो है एक लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम का, जहां पे आप जाके हमारा लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। बिकॉज जो लोग ये समझ रहे हैं कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको हमारे टेलीग्राम पे प्रैक्टिस कराएंगे। गाइस, जो आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, दीज आर जस्ट अ प्रोटोटाइप। हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि आप कैसे सीख सकते हैं। लेकिन अगर हमारा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं और वीडियोस मतलब देख देख के, जो भी वीडियो देख के जो टेलीग्राम ज्वाइन करेगा, हम उनको वहां पे प्रैक्टिस के लिए डेटा अवेलेबल कराएंगे। विल गिव यू ऑल द डिटेल्स, all the datas, all the necessary items that you need in order to learn English, in order to speak English. We'll be helping you that. So guys, do not forget to join our Telegram channel, because this is where we'll be helping with that. All right. So fastest way to speak English, we'll be doing that for you next time once we are ready with that. And for as of now, make sure guys that you do not forget to do one thing, is to make English your lifestyle, make English your like daily routine, that you're speaking anywhere where you get a chance, whether it's a restaurant, gym, whether you're going on a walk, whether you're in a park, anywhere that you're going, make sure that you make sure that you use this language as a, like, the first language to speak instead of Hindi, because you already know Hindi, so you don't have to speak Hindi. You want to learn English, then use English as the first language in order to communicate with other person. Soon I'll be coming with more videos for you guys to motivate you for a little bit, make you a discipline in order to speak English. Meanwhile, just go to our Telegram channel, join our channel today, so we can help you with the practice, we can help you with the data, so that way you can at least understand how you're going to speak English in near future. It will help you to get a job, it will help you to start a business, it will help you to go abroad, it will help you in many ways if you have another language knowledge. Trust me guys, if you have knowledge, it will be very, very good for you. It suits your personality. Please guys, stay tuned, we'll be coming back to you. Thank you so much for today's class. We'll be meeting you soon with a new topic. Thank you.